हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे सीएसआर नेट मैथमेटिक्स फरवरी 2022 के एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को, जहां पर एक पीडीई दिया हुआ है गिवन बाय एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0 और इनिशियल कंडीशन है यू ऑफ एक्स 0 इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 बाई एक्स। हमें शो करना है कौन सा यहाँ पर ट्रू है, वेदर इट इज नॉट लीनियर, वेदर यू ऑफ वन वन का वैल्यू ई स्क्वायर है या ई टू द पावर माइनस 2 है, या मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वी कैन यूज टू कंप्यूट द सॉल्यूशन यू ऑफ एक्स वाई। ओके, सो सबसे पहले ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा कि इट इज लीनियर और नॉट लीनियर। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ ए लीनियर पीडीई वी नो दैट अब पीडीई कब लीनियर कब होता है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स। इफ डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, u ऑफ एक्स वाई है, और ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर लीनियर। ओके, so dependent variable and all its partial derivatives are linear, then we can say that the partial differential equation is linear. Okay, so यहाँ पर dependent variable है u and all its partial derivatives अगर check करेंगे so its degree is 1, so it is also linear. So clearly हम क्या बोल सकते हैं, we can check del x del y है और u है, so clearly it is linear, partial derivatives are linear. Hence by definition what we can say, that the partial differential equation PDE is linear. So clearly first option जो दिया हुआ है PDE is not linear is not true. So this is discarded. First option is wrong. अब हमें second option check करना पड़ेगा, that is u of 1 1 का value क्या है, whether it is e square or e to the power minus 2. For that we will utilize the method of separation of variables. Okay, अब separation of variables कैसे करते हैं, हम वो unknown function u of x y को सम x ऑफ x इंटू वाई ऑफ y के फॉर्म में लेंगे। ओके, सो कैसे लेते हैं, सो दैट u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू x फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल y, और वी कैन ऑल्सो राइट कैपिटल x इंटू कैपिटल y। सो u को हम सब्सटीट्यूट करेंगे कैपिटल x इंटू कैपिटल y, where capital X is a function of small x and capital Y is a function of small y. ओके, सो हमारा पीडी क्या दिया हुआ है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 0 with initial condition u of x 0 is equals to e to the power 1 by x, which will use later. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे u के प्लेस में x y we will substitute. तो सिमिलरली डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स डेल वाई क्या होगा, ये डेल एक्स डेल वाई है सॉरी, सो डेल एक्स डेल वाई क्या होगा वो पहले फाइंड करते हैं उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू। सो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई कैन बी रिटन एज डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल वाई, ओके, विच इज सेम। नाउ व्हाट वी विल डू, u के जगह वी विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल x इंटू कैपिटल y, सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल y ऑफ कैपिटल x इंटू कैपिटल y विच वी हैव एज्यूम्ड। सो अब क्या होगा, जस्ट उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y पहले करो, विच विल बी x y डैश, here y dash or y prime is del capital Y by del small y. Okay, that you remember. Now del by del x of capital X into capital Y prime will be x dash into y dash, because del by del x with respect to capital X can be done because capital X is a function of small x. Okay, now just we will substitute the value of del square u by del x del y, which is x dash into y dash plus 3 y square u as it is, u के जगह हम लोग लिखेंगे x into y is equals to 0. Now we will take x square x dash y dash is equals to 3y square xy to one side. So what we'll get, x square x dash y dash is equals to minus 3y square xy, इसको एक साइड ले जाते हैं. Okay, now what we will do, just separate variable separable. Okay, just separate x dash with x and y dash with y. That means x dash to one side and minus 3y square y by y dash. Okay, y dash will come to this side. Now what we will take, we will assume this value is equals to some constant. Say sum is equals to some m. Okay, m we will let. Now we will treat
x dash term and y dash term separately. Okay, कैसे करेंगे? x square x dash by x को equals to m, we will get one equation, and similarly with y we will get one equation, and we'll solve separately. We'll get the function capital X and capital Y. Okay, so x square x dash by x is equals to m, and minus 3y square y by y dash is equals to m. So these two are separate equations. Separately we will find the solution. Okay, so सबसे पहले हम treat करेंगे x dash term को. Now it can be written as x square, and what is x dash? X dash is dx by d small x, and 1 by capital X is equals to m. So what we will get? D capital X by capital X, and d small x term to one side, that means dx m as it is, x square term to this side, and dx as it is. So अब क्या करेंगे? इसका both side integration we will do. Okay, left hand side with respect to capital X and right hand side with respect to small x. So what we will get? D capital X by capital X का integration क्या होता है? log capital X is equals to 1 by x. x square का integration क्या होता है? minus 1 by x. So it will be minus m by x plus some constant, say c1. Okay, now what we'll do? What is capital X? Capital X will be is equals, implies capital X will be e to the power, because log this side will be e to the power minus m by x plus constant c1. So this will get the function capital X. Similarly, we will solve the equation for capital Y. We will get the term for capital Y also. Okay, so कैसे करेंगे? Similarly, this equation is minus 3y square y by y dash equals to m, and y dash is nothing but d capital Y by d small y. Okay, so अब क्या करेंगे? y dash term को will bring to one side and small y term will bring to another side. So y dash by y is equals to nothing but minus 3y square by small m. Now both side integration will do. We'll proceed as in the previous case. So dy by d small y, which is y dash, 1 by y as it is equals to minus 3y square by m, which we will get as 1 by y, or d capital Y by capital Y is equals to minus 3y square dy by m. So यहाँ पर भी both side integration करेंगे. So both side integration करो, left hand side with respect to capital Y and right hand side with respect to small y. So left hand side, as in the previous case, is log capital Y is equals to minus 3y square का integration क्या होता है? y cube by 3. So minus 3y cube by 3 m as it is plus some constant of integration c2. 3 cancel. अब क्या आएगा? y is equals to directly e to the power, log यहाँ इस side से क्या होता है? e to the power. So e to the power minus y cube by m plus constant of integration c2. So ये आ गया हमारा capital Y का function. अब we have got x, capital X and capital Y. Just we will substitute here because u we have assumed as capital X into capital Y. So क्या आएगा? Just substitute करो x और y का value. So x आ गया e to the power minus m by x plus c1 into, in place of y it is e to the power minus y cube by m plus c2. Okay, so we can write is u of xy is equals to this value, because we will now use the initial condition. That is, what is initial condition given? U of x0 is equals to e to the power 1 by x. Just we'll compare that to get the value of c1, c2 and m, corresponding value of constant c1, constant c2 and value of m. Okay, so x के जगह x और y के जगह 0 पुट करो. क्या आएगा? u of x0 is equals to x as it is and y के जगह 0 पुट करो, e to the power minus m by x plus c1 into e to the power 0 plus c2 by m as it is plus c2. Okay, and that is given as e to the power 1 by x, because e to the power 1 by x initial condition is given. So what we'll write? E to the power minus m by x plus c1 into e to the power c2 is equals to e to the power 1 by x. So if we'll compare it, we can just simplify little more. E to the power minus m by x
plus C1 plus C2 is equals to e to the power 1 by x. So just if you compare the LHS and RHS power, then what we will get? We can write the RHS e to the power 1 by x as e to the power 1 by x plus 0, because in terms of 0, just to show what is the value of C1, C2, we can write plus 0, okay, from which what we will get? So we can write C1 is equals to 0 and C2 is equals to 0, and from which m is equals to what? -1, because m -1 होने से ही ये 1 by x आएगा, because minus m by x will be minus of -1 by x, which is 1 by x. So hence, comparing the coefficients or comparing the power of LHS and RHS, we got C1 is equals to 0, C2 equals 0 and m equals to -1. So just अब substitute करो यहाँ value u of xy में, okay. So after substituting in u of xy, what we will get? M का value -1, C1 का value 0 and C2 का value 0. It will be 1 by x into e to the power minus y cube, okay, by m is -1. This is -1 cancel, so it will get y cube only. So m is -1, C1 equals 0, C2 equals 0. So what we got? E to the power 1 by x into e to the power y cube, or e to the power 1 by x plus y cube. So this is the value of u of xy, which we got by separation of variable, method of separation of variable use करके हमने ये value find किया, solution u of xy. Okay, so now we can clearly get the value of u of 1, and before that we know that we have used method of separation of variables. So option D or fourth option is correct. Okay, fourth option correct. अब क्या करेंगे? u of 1 निकालो यहाँ से. u of 1 क्या आएगा? u of xy is e to the power 1 by x plus y cube. So 1 by 1 plus y की जगह 1 cube, which is 1. So e to the power 1 plus 1, which is क्या? e to the power 2. So यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन 2 में दिया हुआ है e to the power 2. Okay, so option 2 is correct. So option 3 is discarded. Option 3 तो wrong होगा, option 1 correct है क्योंकि we got. Okay, so यहाँ से option 2 और option 4 correct है क्योंकि ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, इसलिए एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है. So आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.